हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो मैं एक अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं इस पूरे एक्सपीरियंस को इन डिटेल डॉक्यूमेंट भी किया हूँ, एक मीडियम पे ब्लॉग पोस्ट भी लिखा हूँ सारे क्वेश्चंस और आंसर के साथ। क्या क्या हुआ एंड टू एंड, लाइक फ्रॉम टेलीफोनिक राउंड to like from applying to job portal, from getting the calls, and how I tackle and how I discuss each and everything, and in each round which type of question were asked from to me and how I replied। और उसका मैंने सबको क्वेश्चन के आंसर भी लिखे हुए हैं with the code also। Yeah, so let's start the video. So I am sharing my screen and I will explain each and every process and each and every answer. Hi, welcome once again. So today I'm sharing one of the interview experience which I asked for like 12 LPA as a front-end developer. So before going to the video directly, let me introduce myself. Like I am a senior full stack developer. I have experience in the IT industry for more than 6+ years, and today I'm going to share my one of the interview experience, which is one of the Indian tech giants. तो इसमें क्या-क्या राउंड्स थे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल my profile is selected from one of the job portals, and after that I had a telephonic round with the talent acquisition specialist. And here are all the rounds which I mentioned. Like after this, there was a technical interview round 1, and then again technical interview round 2, and after that the final technical manager round. So सबसे पहली बात कि be prepared with the your intro because it is asked in each round. And in the telephonic interview round, like I got the call from the guy and he asked various questions, so I have mentioned below. तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या पूछा गया मेरे से। और फर्स्ट दे ही आस्क्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइक प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ इन ब्रीफ, such as background, skills, hobbies, current projects. So you guys have to prepare accordingly. So let me give my introduction. So myself Jamant Yadav, I am from Delhi and I have done BTech in computer science, and after that I have worked for various organizations and I have almost 6 years of experience as a full stack developer. And my major tech stack is like Mongo, React, Node.js, and JavaScript. And I worked on little bit of Angular as well. And my hobbies are playing cricket and riding bikes and reading tech documentations. तो ये तो मेरा इंट्रो हो गया। आप अपना इंट्रो अपने अकॉर्डिंग तैयार करिएगा और देयर मस्ट बी फॉलो अप इंट्रो क्वेश्चन एज वेल। ये आपकी हॉबी क्यों है, आपने ये करते हैं, अगर मान लो मेरी ट्रैवलिंग है तो आपने क्या क्या ट्रैवल कर रखा है, बाइक है तो बाइक कौन सी पसंद है, कैसे है, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कई बार टैलेंट एक्विजिशन लाइक एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए वो एक दो स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, जो कि मेरे बारे में भी पूछा गया था। उसके बाद they will give a brief intro about like job profile, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चाहिए उनको। तो वो सब ब्रीफ देने के बाद they may ask the question related to your current CTC as well as expected CTC also. So be prepared कि how much you need to ask, or you can ask that if you are ready to negotiate, or you can ask what's about your budget also. It's not मतलब कि वो बुरा मान जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। You can ask this as well. You have also right to get clarify all your question with him. So after this all talk, like he asked me some tech related questions as well. सबसे पहला क्वेश्चन था like this interview was around of 1 or 2 years of experience as a front end developer. तो उसके अकॉर्डिंग बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने कॉल पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट आर स्टेट्स एंड प्रॉप्स इन रिएक्ट। सो आई गिव द आंसर correctly, and I have like given the solution to you guys well how can you can proceed and answer this question. So like in React, both states and props are fundamental concepts that help manage and pass data within React applications. अब states क्या होती हैं? So states is a object that stores a component
dynamic data and determines its behavior. It represents current condition or state of component, and when the state changes, React re-renders the component to reflect the updated state. ठीक है, बेसिकली कोई भी स्टेट होती है उसको हम लेते हैं, डिफाइन करते हैं, और जब भी वो स्टेट चेंज होती है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा कंपोनेंट री रेंडर होता है, और ये एक ऑब्जेक्ट होता है और टू वैल्यूज लेता है. व्हाट आर प्रॉप्स? सो प्रॉप्स आर बेसिकली short for properties, and properties are parameters that are passed to a React component. They allow you to pass the data from a parent component to a child component. Props make components more flexible and reusable. In summary, we can say that states represent the internal data of a component that can change over time, while props are external data to a component from its parent. Both state and props contribute to building dynamic and interactive React applications. But this is the brief answer. I give him a short answer on the call, and after that he like triggered another question, like what are hooks in React? Please name some of the hooks. So I give the like key Reacts are Reacts are introduced in React 16, which with the help of that we can like write all the functionality which we can. It is a new way to define all the functionality which we can use in the class component. और उसके बाद मैंने रिएक्ट हुक्स के भी नाम दिए, जैसे कि यूज स्टेट, यूज रेफ, यूज इफेक्ट, यूज मेमो, यूज कॉल बैक, यूज रिड्यूसर, यूज कॉन्टेक्स्ट, ये सब मैंने बताए. बट यू कैन गिव द प्रॉपर डेफिनेशन विच आई हैव रोट. You can prepare for it. That's why I give the same. Like in React, hooks are functions that enables functional component to use state and other React features that were previously only available in class components. Hooks were introduced in React 16.8 to allow developers to use state and side effects in functional components without the need for class components. There are several built-in hooks, and you can also create custom hooks. So some of the hooks are use effect, use state, use memo, use callback, use reducer, and use context. And you can also give like rules of using hooks, like don't call all don't call hooks inside loops, conditions, or nested functions. Always use them at the top level of your functional component. Hooks can only be called from within React functional components or custom hooks. Third one is like hooks should always start with the word use. Example, use state, use effect, such on. And the last but not least, like call hooks in the same order every time. This ensures that React maintains the proper state between renders. So I give him answer. Then again he asked another question, like name various type of function used in JavaScript. So there are various functions used in JavaScript. So I named like some of them, like callback function, immediately invoke function, arrow functions, generator functions, and many more. I give around 5 to 6 names, but I have listed down like all of the functions which are present in JavaScript. You can check. Like here is first one is functional declaration. So the traditional way of declaring a function, like you can say that function, giving a function name and parameters, return a plus b. And the second is function expression, like assigning a function to a variable. Like we assign a function to a variable. Like here in the example, we can see a const multiply function a comma b and return a into b. Third one is arrow function. So arrow function is a concise syntax introduced in ES6. Like we can see that const divide equal to in braces we pass the parameters, and then this. And what is then next one is the immediately invoked function expression. So what it does, a function that is executed immediately after it is created. So its syntax is before function we give a opening bracket,
and at the last we give the close bracket. Here you can see, and give the close the and give the function. So it will be immediately invoked. Then next one is what is generator functions. So generator functions that can be paused and resumed. So here you can see that like we pass the next init and we give the yield 1, 2, 3 like that. Then we comes to the recursive functions. So a functions that call itself, it is called recursive function. Like here, this is a function factorial, and inside it calls again factorial. So we can, after that, it is the another function is callback function. What callback functions do? Like functions passed as arguments to another function and executed after the completion of that function, that are called callback functions. You can learn in it because there are a lot of questions asked on callback functions and how we can write it, like promises, async commit, इस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेशर से और एडवांस से प्रोफाइल के लिए भी. नेक्स्ट फंक्शन आता है कि व्हाट इज हायर ऑर्डर फंक्शंस. So higher order functions, like the functions that takes other functions as arguments or return functions. So that are higher order function. Here we can see that like here it is multiplier, factor, and return a function. Multiplier function returns another function, so it is higher order function. So the 10th one is anonymous function. So functions without a name often used as arguments for other functions or in situation where function name is not necessary. So that are anonymous function. Here we can see that we have given a variable greet, but we didn't give the name of the function and we directly console.log. This is anonymous function. तो उसके बाद फिर next question he asked me about like what is state management in React. So तब मैंने आंसर किया कि state management in React is like where we can manage our states, and we can manage our states various ways. Like we can use Redux toolkit, and context API. So here the answer in brief, like state management in React refers to the process of handling and managing the state of a React application in a way that ensures the consistent and predictable behavior of the user interface. In React, state represents the data that can change over time, and managing this state becomes crucial as component update and interact with each other. Like React provides local component state, but as applications grow in complexity, the need for a centralized state management solution arises. So state management becomes especially important in large applications where different components may need to share and synchronize states. There are several approaches to state management in React. Suppose that like the first one is local component state. Like React component can have their own local state managed through the use state hook. This is suitable for managing state that is confined to a specific component. Then we have like context API. React's context API allows us to share states between component without having to pass the states through every level of the component tree. Manually, it is for managing global or shared state. Then we have like Redux and various other libraries as well. Like Redux is a popular state management library for React application. It introduces a global store to manage the application state, and states changes are handled through actions and reducers. It's particularly useful for large and complex applications. उसके बाद after giving all the above answer, like she agreed to schedule the next round of interview. So next round of interview, like she scheduled the next day. So this is the technical round interview. So in this round, the interviewer asked some core concept of JavaScript, HTML, CSS, and two data structure algorithms. So what is the
First question he asked is, what is the purpose of callback function in JavaScript and provide an example. So I give the answer him like a callback function in JavaScript is a function that is passed as an argument to another function and is executed inside that function. It is commonly used in asynchronous code to handle the result of an operation. But he didn't ask for the this syntax, but I also written the syntax for you guys. You can check it. Then he asked me what is let and const in JavaScript. So I give him that like let and const are variables which we define, and also give the both are like blockchain behavior, like block scope declaration. So you can give the answer like let and const are block scope declaration in JavaScript and used to declare variable. Let allow us to reassign the value of the variable, while const create a read only reference of the value. We can see in the example like whenever you want to assign something, let's see the example like let message hello world and message hello world. So if you want to console.log message, so it will print hello Jamwant, because we can reassign the value to the let, but for the const we can't reassign it as a variable. It will give the type error. Then he again asked me what are spread operators in JavaScript. So I give him like in JavaScript, the spread operators is used to expand the element of an array or string, or to spread the properties of an object. That's it. I given this only. And after that, you can also add to this point, like it provides a concise way to copy elements of from one array, object or iterable into another. The spread operators is versatile and commonly used for tasks like copying, merging, and passing elements between arrays, objects, and function arguments in a concise and readable manner. You can see the all the example I have written, and we can use it with the three dots spread operators. Like I have written the example of copying arrays, how we can do it, how we can concate, like we can combine two arrays. We can do also with the spread operators. How we can add elements to an array. Like here we have 1, 2, 3. So we can add 4, 5 also with the help of spread operators. How we can copy objects. We can copy objects with the help of the spread operator also. How we can merge objects. Passing array element as an argument we can also do with the spread operators. We can also do like copying an object and modifying the properties with the help of rest operators. After this, like he asked me two DSA questions. So here is the problem one. You can see that the problem was like if you want to climb a staircase with n steps, at each step you can either climb one or two steps. Write a function in JavaScript to find the number of distance way you can reach it. So whenever the DS question arises, you can ask as many as question to the interviewer and edge cases also. So after reading the question, like I understood like how we can do it. जैसे ही कि मैंने ये क्वेश्चंस टाइप के पहले भी कर रखे थे, तो इसके लिए मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि इस मेरी क्या अप्रोच है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एक्सप्लेन योर अप्रोच, and while writing the code as well, you need to like show him or tell him what are you thinking in your brain. So this might very helpful, because this interview should be like interactive in both ways. So चलिए इस क्वेश्चन को मैं करता हूँ. इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तो VS कोड पे चलते हैं और उसके बाद दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया था. तो दिस इज द प्रॉब्लम वन, like problem statement is this. So we are going to write a function count raise. तो मेरे दिमाग में सबसे पहले तो ये आया था कि इसको हम कैसे कर सकते हैं. तो मैंने
सोचा कि ये क्वेश्चन रिकर्सन से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एन टाइम्स कितना भी हो सकता है, लेकिन उसको हम कैसे लेंगे? या तो एक कदम ही चल सकता है या दो कदम ही चल सकता है। सपोज दैट्स की अगर 10 सीढ़ियां हैं, एक एक कम करेंगे तो मान लो एक एक बार चढ़ा, दो दो कम करेंगे तो दो दो बार चढ़ा। तो इसका एज केस लिखेंगे। तो सपोज वी हैव काउंट पेज ऑफ एन। सपोज हमारे पास एन सीढ़ियां हैं, ठीक है। तो इसके लिए फिर बेस केस लिखना पड़ता है रिकर्सन के लिए, सबको पता है। ये रिकर्सन रुकेगा कब? तो द फर्स्ट बेस केस तो ऑब्वियसली है कि इफ एन इज लेस देन इक्वल टू जीरो, डायरेक्टली वी रिटर्न एन और रिटर्न जीरो। लाइक कोई वे ही नहीं है, सिंपल सी बात है। जब सीढ़ी ही नहीं है तो क्या ही चढ़ेगा और क्या ही उतरेगा। उसके बाद एल्स इफ, अब हम देखेंगे कि एन इक्वल टू वन। अगर एक ही श्रेणियां हो तो वो क्या करेगा? एक रिटर्न कर देगा। एक ही तरीका है भाई, एक श्रेणियां है तो। देन बेस केस देखेंगे इसका। अगर दो सीढ़ियां हैं तो, दो सीढ़ियां हैं तो हम तो डायरेक्टली देख सकते हैं कि दो सीढ़ियां तो क्या होगा। कितने तरीके होंगे? एक तरीका, फिर दो तरीका। इसे एक बार एक लेगा, फिर ये दो लेगा। और वन का हम पहले ही लिख चुके हैं, दैट्स वाई वी रिटर्न टू। एल्स, ये फिर सिंपल सा हो जाता है कि अगर एल्स होगा तो क्या? रिटर्न काउंट वेज एन माइनस वन, और प्लस करेंगे एन, इन काउंट वेज एन माइनस टू। ये हमारा हो गया। अब इसको एक बार, ये फंक्शन है, बेस कंडीशन दे दी कि वो कैसे कब कब रिटर्न करेगा। और उसके बाद फिर काउंट वेज को अगेन कॉल किया एन माइनस वन एन माइनस टू के लिए। सपोज दैट हमारे पास क्वेश्चन का इनपुट 10 आउटपुट 5 आना चाहिए। वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे आएगा। सो जी कंसोल डॉट लॉग काउंट वेज लिखते नो, so we got the 5. Suppose we do for the 5, what we will get? 8। तो ये क्वेश्चन पूछने के बाद इंटरव्यूअर ने मेरे को एक और चीज पूछी थी, सेम फॉलो अप क्वेश्चन इस क्वेश्चन में, कि ये बताओ कि ये क्या पैटर्न क्या बन रहा है। पैटर्न क्या बन रहा है इन द सेंस कि जैसे कि मान लो ये एक रहा, टू, जो थोड़ा बड़ा करते हैं कि आउटपुट आएगा तो पैटर्न पता चलेगा। ये क्या पैटर्न क्या बन रहा है, मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था। तो फिर मैंने ध्यान दिया, फिर मैंने देखा, तो आई वॉज एबल टू गिव द आंसर लाइक कि ये पैटर्न बन रहा है फिबोनाची सीरीज का। फिबोनाची सीरीज पता होगी क्या होगा, कि प्रीसीडिंग दो एलिमेंट को ऐड करके थर्ड एलिमेंट आता है। जैसे हेयर वी हैव 1 and 2, 1 and 2 का सम 3, देन 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13। तो इधर अगर हम काउंट ये 6 करेंगे तो इधर हमारे पास आएगा लास्ट टू का क्या होगा, 8 और 5 13, इसमें 13 भी इंक्लूड हो जाएगा। हेयर इट इज। तो हमें सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए डीएस के, क्या क्या पूछ सकते हैं। जैसे फिबोनाची सीरीज, बेसिक मैथ्स तो आनी ही चाहिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो इसका मैंने सोल्यूशन भी दे रखा है और एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है कि लाइक देयर आर 5 फीट टू क्लाइंब 4 विथ स्टेप, कैसे कैसे कर सकते हैं। या तो बंदा एक 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 करके जाएगा, पहला वीडियो हो गया। दूसरा वीडियो हो गया कि दो सीढ़ी को एक एक करके चढ़ेगा, और फिर उसके बाद सीधा 2 जंप करेगा, चौथे पहुंच जाएगा। फिर या तो एक गया, फिर उसके बाद 2 जंप किया, फिर एक गया, ये तीसरा हो गया, फिर दो, एक एक। तो अगर 4 सीढ़ी चढ़नी है तो 5 फेस होंगी। इसका कोड भी लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट अ बाइनरी सर्च एल्गोरिदम इन जावास्क्रिप्ट। तो उसके लिए तो सबसे पहले आपको बाइनरी सर्च पता होना चाहिए होता क्या है। तो इसीलिए सारे अपने बेसिक डीएसए कंप्लीट होने चाहिए, सारे एल्गोरिदम्स कंप्लीट होने चाहिए, तो ही आप मतलब डीएस के क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हो। तो चलो इसको भी करते हैं। पहले बाइनरी सर्च होता क्या है। बाइनरी सर्च algorithm is a fast search algorithm that works by dividing a sorted array in half and repeatedly eliminating one half of the remaining elements until the target is found or there are no more element to search। तो पहली तो बेस कंडीशन ये हो गई कि अरे सॉर्टेड होना चाहिए, और सॉर्टेड एरे होना चाहिए इनपुट में, और उसके बाद हम फिर उसको हाफ हाफ डिवाइड करके ये अप्रोच लाइक 2 पॉइंटर्स अप्रोच के साथ सर्च करते हैं। तो आइए इसका भी कोड करते हैं, देखते हैं इसका कोड कैसे होगा। आई वॉज एबल टू डू द बोथ क्वेश्चन। तो इसका भी फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन एंड रिसर्च, इसमें दो चीजें जाएंगी, एक तो एरे जाएगा और एक और जाएगी टारगेट वैल्यू जो हम क्या सर्च करना चाहते हैं। ठीक है, तो एरे जाएगा इनपुट में और एक टारगेट जाएगा। ठीक। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है कि एरे को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। उसको कैसे करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमारे पास इनिशियल वैल्यू होनी चाहिए और लास्ट वैल्यू होनी चाहिए। तो या तो हम, आपकी मर्जी है, स्टार्ट एंड ले लो या फिर लेफ्ट राइट ले लो, और उसके बाद फिर हम मिड निकालते हैं और फिर चेक करते हैं। तो लेट स्टार्ट इक्वल टू 0 एंड लेट एंड। सो अब इसमें लॉजिक कहाँ लगता है कि एंड क्या होगा, हमारा एरे का एंड एलिमेंट क्या होगा। एंड, एंड होगा एरे डॉट लेंथ -1, क्योंकि हमारे एरे की इंडेक्सिंग किससे होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो एरे के आखिरी लेंथ से -1। अब अब इसकी हमारी कंडीशन चलाएंगे कि हमें कब तक लूप ना चलाना है उसको चेक करने के लिए। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, वाइल लूप। ऑटो सजेस्ट आ रहा है, लेकिन वो हमें ऑटो सजेस्टेड वाले भी नहीं कराते हैं। वो या तो तुम्हें कोई नॉर्मल सा ऑनलाइन जीएस एडिटर दे देंगे या फिर प्लेन नोट पे करवाते हैं। ठीक है, तो कोड करना ये वाली सहूलियत तो नहीं मिलेगी। सेकंड, अब हमें मिड निकालना पड़ेगा। तो लेट मिड, मिड इक्वल टू कैसे निकालेंगे। तो मिड निकालने का भी फॉर्मूला है, या तो पहले और आखिरी वाले एलिमेंट को करके डिवाइड कर दो, 2 कर दो। तो ये तो अगर इवन होगा तो हमारे पास आ जाएगा, लेकिन उसके लिए अगर ऑड एरे लेंथ होगी तो क्या होगा। उसके लिए हम फिर मैथ डॉट फ्लोर यूज करते हैं। तो मैथ डॉट फ्लोर स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, CNG मेड।
तो इसके लिए चेक करने के लिए क्या करेंगे, दैट एरे इक्वल टू एरे शुड बी सॉर्टेड 2 2 3 4 वन से ले लेते हैं, तो हमें इसका काउंट भी पता रहेगा इंडेक्स का, क्योंकि हम मिड निकाल रहे हैं। ठीक है। एंड लेट टारगेट इक्वल टू 10, अभी तो ऐसे लिखते हैं 10। ठीक है। फिर इसको हम चलाने की कोशिश करते हैं। फिर वो टू ये जो लॉग उसके अंदर है, तो इसको करो, ये वाली लाइन हम यहाँ लिख देते हैं ना। कॉल ही नहीं किया है। PLG बाइनरी सर्च, फिर एक कॉमा टारगेट 4444, ये रुक नहीं रहा, क्योंकि वो बार बार वाइल लूप चलता जा रहा है। ये हमारा मिड हो जाएगा 4, तो जीरो इंडेक्स 1 2 3 4, तो ये हमारा मिड है। ग्रेट। अगर इसमें हम एक और लगा दें, हमारा मिड क्या आना चाहिए, वो चेक कर लेते हैं। और ये आएगा, उसको हम आगे की कंडीशन में फिर वो क्लियर कर देंगे कि उसके लिए क्या लेंगे हम। ठीक है। क्लियर। मिड आ गया हमारा। अब हमें कंडीशन लिखनी है। कंडीशन क्या है, हमें टारगेट वैल्यू निकालनी है। तो इफ एरे मिड इक्वल टू टारगेट, सिंपल से क्या करेंगे, रिटर्न मिड, क्योंकि हमें इंडेक्स देना है। इंडेक्स देना है मतलब कि किस इंडेक्स पे है। एल्स इफ एल्स इफ से क्या करेंगे कि एरे जो मिड है, एरे मिड इज लेस देन टारगेट। तो अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम करेंगे जो हमारा स्टार्ट है। मैंने कोशिश करी है इसमें कि अगर हमारा जो एरे मिड है वो टारगेट से छोटा है, तो आधा एलिमेंट टारगेट के इधर का तो कोई वैल्यू नहीं है उसको चेक करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट को मिड, मिड पे भी नहीं था तो मिड प्लस वन कर देंगे, और आखिरी मतलब फिर आधे से अधिक और उसके आखिरी वाले एरे में ही सर्च करेंगे, और आधे को हम पूरा नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है। और फिर से ये लूप चलता रहेगा। नहीं तो आखिरी कंडीशन, एंड इक्वल टू एंड -1। उधर से हमारा जो एंड है वो मिड को छोड़ के उससे पहले वाले से कर देंगे, मतलब स्टार्ट से और मिड से एक पहले वाले तक ही ढूंढेंगे, बाकी उधर को हटा देंगे अगर टारगेट पहले हाफ में हुआ तो। और इन सब में भी नहीं मिला तो क्या कर देना है हमें कि रिटर्न -1। -1 होगा मतलब वो है ही नहीं उस एरे में वो वैल्यू जो हम ढूंढ रहे हैं, जैसे कि ये है। फिर पहले हम 7 को ढूंढ के देखते हैं। ठीक है। इसमें 7 है और 7 क्यों नहीं आया, बस स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस वन, एंड इक्वल टू -1। अरे यार, -1 आएगा, ये हर बार -1 आएगा।
ऐसे सिली सिली मिस्टेक्स होती हैं, इन सब का ध्यान रखना। -1 सिक्स पोजीशन पे है। अगर हम वही टारगेट को ले लेंगे कुछ 17, इस एरिया में 17 है कि नहीं, -1, और ये सिक्स पोजीशन पे है, इसको कैलकुलेट भी कर लेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, सिक्स पोजीशन पे ही है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। और इसके बाद ही आस्क्ड मी अबाउट सम बेसिक HTML एंड CSS क्वेश्चन की टैग्स क्या होते हैं, 5 टैग्स के नाम बताओ, और लाइक व्हाट इज सिमेंटिक एलिमेंट्स, ये सब बेसिक क्वेश्चन पूछे थे। तो ये तो हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट, और इसमें CSS के भी क्वेश्चन पूछे गए थे कि व्हाट इज पोजीशंस, व्हाट इज स्पेसिफिसिटी, डिफरेंशिएट बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पोजीशन। बाकी थ्योरी थ्योरी क्वेश्चन, लाइक बेसिक बेसिक 5 बेसिक HTML questions and 5 basic CSS questions. So after that I cleared, after the interview, like within 15 to 20 minutes, I get a call from same guy, and he said that you have cleared the interview, and we will like to schedule the second round of interview. So the next round of interview was scheduled very next day. So that is the part one of this interview experience series. हाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी होती जा रही थी, सो इसका मैंने सेकंड राउंड भी रिकॉर्ड करूंगा, और उसको भी सेम ऐसे ही जो कुछ भी मेरे से पूछा गया उसको भी मैं क्वेश्चन आंसर के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। तो बेसिकली राउंड 2 में मेरे से रिएक्ट मशीन कोडिंग राउंड के 2 क्वेश्चन पूछे गए। इन डेप्थ रिएक्ट के बारे में डिस्कस किया गया। तो जो जो भी क्वेश्चन डिस्कस हुए उसको भी मैं सेम ऐसे ही डॉक्यूमेंट करूंगा और वीडियो अपलोड करूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और जल्द ही राउंड 2 वीडियो के साथ मैं आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।